हेलो गाइस, नबार्ड रो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी रो नोटिफिकेशन ऑलरेडी बाहर सारछि और एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गलानी 17 जनवरी 2024 रो ता लास्ट डेट होछि 3 फरवरी 2024। तो देखंतु 3 फरवरी 2024 तारो लास्ट डेट, मतलब प्रीलिम्स होबो केबे 21 फरवरी 2024 और मेंस होबो 12 अप्रैल 2024। माने तो पाखरे 3 फरवरी रो 21 फरवरी भितरे गोटे मास मध्य नाही, केवल 18 दिन अछि। और जो 21 फेब्रुआरी रु 12 अप्रैल भितरे रहिले केते मार्च 21 प्लस माने 1.5 मास आ 1.5 मंथ रहिला। प्रीलिम्स पई होची रहिबो 18 दिन और मेंस पई रहिबो 1.5 मंथ। तो एबे देखिबा डेवलपमेंट असिस्टेंट रे केते वैकेंसी अछि। नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ रिजर्व एंड रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट 159 टा टोटल वैकेंसी। ऑन रिजर्व रे अछि 78 टा, एससी रे अछि 21 टा, एसटी रे अछि 17 टा, ओबीसी रे अछि 26 टा और ईडब्ल्यूएस रे अछि 17 टा। है और सबठो हाईएस्ट वैकेंसी अछि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबठो हाईएस्ट अछि। ओडिसा रे अछि 8 टी, मात्र 8 टी अछि ओडिसा रे। सेतिर ऑन रिजर्व अछि 5 टा, एसटी 2 टा, ओबीसी गोटे और एससी ईडब्ल्यूएस पई किछि नाही। तो नोटिफिकेशन देखि दियंतु उठी केते वैकेंसी अछि। कोस्टेट रे अंडमान रे अछि गोटे, आंध्र प्रदेश रे अछि 7 टा, आसाम रे अछि 5 टा, बिहार रे गोटे, छत्तीसगढ़ रे 5 टा, गोवा रे गोटे, गुजरात रे 9 टा, हरियाणा रे 3 टा, हिमाचल प्रदेश रे 4 टा, जम्मू कश्मीर रे 3 टा, झारखंड रे गोटे, कर्नाटक रे 7 टा, केरला रे 3 टा, लद्दाख रे 2 टा, मध्य प्रदेश रे 10 टा, महाराष्ट्र तो आगु कहथिले 48 टा, मणिपुर 2 टा, मेघालय गोटे, दिल्ली 3 टा, ओडिशा 8 टा, पंजाब 2 टा, राजस्थान 5 टा, तमिलनाडु 9 टा, उत्तर प्रदेश 11 टा, वेस्ट बंगाल 8 टा। ओके, तो सबठो अधिक कोड अछि, अधिक अछि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल हां तमिलनाडु अछि। देखंतु एबे देखिबा नंबर ऑफ वैकेंसी रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। हां हिंदी तो तारो वैकेंसी अछि टोटल 3 टी, ऑन रिजर्व 2 टा और ओबीसी रे गोटे। ओके, तो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस रे नाही, टोटल एरा पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन देखो टोटल नाही। एनु कोइचे कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन वन स्टेट ओनली, माने केवल गोटे स्टेट रे पई तुम अप्लाई करि परिबो। डिफरेंट स्टेट पई तुम अप्लाई करि परिबो नाही। The bank reserves the right to increase or reduce the number of vacancies or not to fill up any or all of the vacancies or cancel the recruitment process. तो बैंक चाहिए जदि बैंक पाखे से राइट अछि, से चाहिए जदि इंक्रीज करि परिबो ना रिड्यूस भी करि परिबो जते वैकेंसी बाछि। और देखो इट कोन कहै छै कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट एदर डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी माने केवल गोटे पोस्ट पई और गोटे स्टेट पई तुम अप्लाई करो। इठी गोटे पोस्ट पई कहै छै, इठी गोटे स्टेट पई कहै छै। अछि वन स्टेट और वन पोस्ट कोड गोटे स्टेट में अप्लाई करो और गोटे पोस्ट में ही अप्लाई करो। डेवलपमेंट असिस्टेंट नहले डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी एते बुझले। देखो एबे हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिबा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन कहै छै 21 रु 35 वर्ष बयस हिथर अछि, तो मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 35 वर्ष। तो केबे भितरे 1 जनवरी 2024 भितरे आपन 35 वर्ष चालू छिबार अछि। 35 वर्ष कंप्लीट हेला होनी, 35 वर्ष चालू छिबार अछि। कैंडिडेट्स नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1991 और नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। बोथ डेट इंक्लूसिव माने दीटा डे को मजा मिसा दिबो 2 जनवरी 1991 और 1 जनवरी 2005 को मजा मिसा दिबो, मिसी के तुमरो बयस 21 25 वर्ष भितर हिथर अछि। नेक्स्ट देखिबा एज लिमिट एससी एसटी पई अछि 5 वर्ष, हां अप टू 40 माने इति केते कहैछला 35 मैक्सिमम 35 वर्ष नै, तो 5 वर्ष जदि रिलैक्सेशन हला ताले 40 वर्ष मैक्सिमम। ओबीसी उसी 3 वर्ष माने 38 वर्ष जाय ओके परबे। आ पीडब्ल्यूडी 10 वर्ष जनरल पई, ओबीसी पई 13 वर्ष और एससी एसटी पई 15 वर्ष। ओके 15 वर्ष एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम 50 इयर्स नै, और विडो डिवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड फॉर एससी एसटी पई 5 वर्ष बा 40 वर्ष जाय ओके परबे। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हां डेवलपमेंट असिस्टेंट तो देखिबा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मिनिमम 50% मार्क, मिनिमम 50% मार्क्स रे तने पास हिथर अछि। आउ जदि ऑन रिजर्व पई एटा कहा पई ऑन रिजर्व जनरल कैटेगरी पई 50%, बाकी रहला और ओबीसी पई नो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क केवल जनरल और ओबीसी पई बुझले। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी माने पई ओनली पास है, ओनली पास जति परसेंट रखथां तो पास हला। और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी है ना, पीसी रे तुम्हें जो टाइपिंग तुम जानि छ अछि मैंडेटरी नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं इठी। तो देखिबा डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी बैचलर डिग्री जे कोनसी
होचे यूनिवर्सिटी इंग्लिश किंवा हिंदी मीडियम तुम पढ़ुले है बैचलर डिग्री दरकार इंग्लिश हो कि हिंदी मीडियम हो ओके आउ हिंदी और इंग्लिश होची कंपलसरी सब्जेक्ट हितवर अछि कंपलसरी ना इलेक्टिव सब्जेक्ट हितवर अछि मिनिमम 50% मार्क थिबार अछि ओके एटा कहा पई जनरल पई आउ ओबीसी पई है मात्र एससी एसटी पीडब्ल्यू एक्स सर्विस कैंडिडेट्स पई ओनली पास थिबार अछि है एटा आउ कथा कहछि और बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क यानी कि ऑनर्स सब्जेक्ट ले 50% मार्क बाकी अदर कैंडिडेट तो जस्ट पास क्लास दरकार नाउ कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश और नॉलेज ऑफ व्हाट वाज ऑन पीसी ओके इट कोन कहछि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर post in a particular state should be proficient in the official language of the state ओडिसा रो official language ओडिया सेमती तमिलनाडु रो तमिल आंध्र प्रदेश रो तेलुगु तो सेमती तो से कोन कहछि जे कोन से पोस्ट पाई जो स्टेट रो पाई से अप्लाई करो स्टेट रो ऑफिशियल लैंग्वेज रे से प्रोफिशिएंट हित अछि से माने से होछि पढि पारे अछि लिखि पारे अछि कहि पारे अछि बुझि पारे अछि हला अब देखिबा प्रीवियस एग्जाम रे कोन से पढिबा इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटीज रीजनिंग इंग्लिश होछि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इनटू 20 मिनिट्स और मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटीज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनिट्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनिट्स सेम टू सेम एसबीआई आईपीएस तो मेंस एग्जाम होबो रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे प्रिसाइज राइटिंग रिपोर्ट लेटर राइटिंग एती बोलियो तो रीजनिंग होची 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनिट्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनिट्स और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 25 मिनिट्स कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनिट्स और प्रिसाइज राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर 3टा क्वेश्चन आसीबो 50 मार्क 30 मिनिट टोटल 200 मार्क 35 मिनिट ओके डिप्लोमा असिस्टेंट रो मते सेम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तापर मेन एग्जामिनेशन तो अब देखिबा देखो डिप्लोमा असिस्टेंट इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आछला किंतु डिप्लोमा असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश आउ टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज बा हिंदी बा इंग्लिश प्रोफेशनल नॉलेज तापर रीजनिंग आछो इठी न्यूमेरिकल एबिलिटीज आसीबो नाही तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनिट्स प्रोफेशनल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनिट्स रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनिट्स वो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क 60 मिनट गुड इट तो मेंस देखियो टेस्ट ऑफ रीजनिंग प्रोफेशनल नॉलेज जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर तो रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 25 मिनट्स और प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट्स कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव पेपर 3टा क्वेश्चन 50 मार्क 30 मिनट्स ओ टोटल आसीबो 200 मार्क क्वेश्चन और 135 मिनट एबे देखिबा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर बोथ मोस्ट ए टेस्ट निहारी दरकार काहे कि ना जे कोन सी स्टेट पई अप्लाई करबे से स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज जणा थिबा दरकार तो जणा नथिबो से जदी प्रोफिशिएंट न थांती ताले डिस्क्वालीफाई हिजबे which those who qualify for selection and have passed the 10th and 12th standard with the declared language as one of the subject will not be subjected to language proficiency test. However, they have to submit valid proof for the same, that is mark sheet for 10th 12th with a specified language as subject. तो से कोई जदि 10th और 12th स्टैंडर्ड रे जे लैंग्वेज तक डिक्लेयर करछन सेटा भी तांकर सब सब्जेक्ट थिला ताहे होची तांकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रे सर निया जीव नाही ह तो तांको होची देखो दुटी कोहा जायछि दी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड ओके तो मेंस एग्जाम रो रिजल्ट बाहरी बा पोरे रीजनल ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट रो होची रीजनल ऑफिस रे होची गुटे होबो टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सी टेस्ट क्वालिफाई करिवार अछि The details of language proficiency test to be conducted would be available on our website after main examination. The details of language proficiency test to be conducted would be available on our website after the main examination. The selected candidates were listed. Candidates would require to undergo the LPT language proficiency test. LPT माने the LPT will be qualifying in nature. Okay, so qualifying in nature. However, candidates not qualifying the test would not be eligible for appointment. Okay, जी qualify करिबे ना से appointment eligible होबो नाही. ये देखा scheme of examination. The preliminary and main online test except English and Hindi language will be available. उसी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आछिबो से लैंग्वेज पेपर छाडी के बाकी सब बाइलिंगुअल होबो है इंग्लिश और हिंदी तो आप हिंदी रे पढि परिबे और इंग्लिश रे भी पढि परिबे प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर देखो प्रिलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर रो होबो ओनली दोस कैंडिडेट्स हु स्कोर सफिशिएंटली हाई इन बोथ इंडिविजुअल टेस्ट इन एग्रीगेट shall be shortlisted for main examination.
প্রিলিমিনারি এক্সাম क्वालिफाइंग नेचर किंतु सेठी कट ऑफ रे आसर ही अछि कट ऑफ रे आसे देखि तुमको शॉर्टलिस्ट करा हबो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को मेन एग्जामिनेशन पे रोका जिवो आ गोटे रॉन्ग एग्जाम पाई गोटे रॉन्ग आंसर देले 1.4 मार्क उठिबो माने 0.25 selection process state wise merit list will be prepared for the final selection okay so state wise merit list state wise cut off बाहर से state wise merit list बाहरिबो the marks obtained in the preliminary examination phase 1 will not be added for preparing the final merit list for selection only the marks obtained in main examination phase 2 both in the objective test and the descriptive test will be added to preparing the final list जदि आपण preliminary examination रे को पास हे कि केवल मेंस रे बसिया पई पास हबा दरकार किंतु तार जो मार्क आसे फाइनल मेरिट लिस्ट इंक्लूड होबो नाही तो फाइनल मेरिट लिस्ट मेन एग्जामिनेशन फेज 2 रो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रे मारा सेटा होची काम को नै दिबो in case where more than one candidate scores the equal aggregate marks now will be resolved by applying the following methods तो कोफ में जणे रो अधिक माने मल्टीपल कैंडिडेट सेम मार्क रखंती मेंस एग्जामिनेशन रे तास मानू केम सिलेक्शन करा दिबो जे तार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई अछि ताको फार देखा दिबो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर से ग्रेजुएशन केते मार्क रखछि माने की अधिक मार्क रखछि ओके ता पर कहार एज अधिक अछि ओके क्वालिफिकेशन तापर मार्क्स तापर एज ओके एती देखा दिबो वेट लिस्ट हो जे 50% ऑफ वैकेंसी टोटल केते आस्तला स्टेट कैटेगरी वाइज माने स्टेट कैटेगरी माने हबो हम ओडिसा रे टोटल तो 8 बारछि तो 8 रो अधा केते हबो तयारी 50% वैकेंसी को वेट लिस्ट रे रखा दिबो एग्जामिनेशन सेंटर और जो स्टेट पे अप्लाई करछो से स्टेट पड़िबो फॉर एग्जांपल कैंडिडेट इट कहै छै फॉर एग्जांपल कैंडिडेट applying to Madhya Pradesh regional office can opt for the center only for state of Madhya Pradesh जो स्टेट पे अप्लाई करियो से एगो से स्टेट रे ही पड़िबो हला सेम स्टेट रे हबो आ सेठी प्रीलिम्स हबो सेठी मेंस हबो एप्लीकेशन फी जहा कि नॉन रिफंडेबल है तो एग्जाम दियो कि नदियो तारे रिफंड हो नहीं तो जो एप्लीकेशन हबो से जीएसटी का ऊपर जीएसटी तो पे करिया पड़ियो एससीएसटी पई एप्लीकेशन फी नील किंतु इंटीमेशन चार्ज 100 टका ऊपर से जीएसटी दबो 18% हैला केते हबो 118 टका पे करिवो फॉर ऑल अदर्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी छाड़ी कि अगर ऑन रिजल्ट आउ ओबीसी माने देबे 450 एप्लीकेशन फी इंटीमेशन होची 100 टका 550 पे दैट इज 18% जीएसटी देबे स्टाफ पे 8 डॉलर देख पड़ दियो all NABARD employees satisfying the educational qualification criteria will be eligible to apply. They will be required to pay fee or intimation charges as indicated above at the time of online application, which will be reimbursed on submission of fee received only to those employees of NABARD staff candidates who satisfy the eligibility criteria for the post. The status as staff candidate will be verified at the time of interview. जो NABARD staff रहले ସେମାନେ फीस हिसाब से फीस ये करा ताको पुरानो रिफंड कर देदिबो जदि ताके जदि इंटरव्यू जदि वेरीफाई करछन्ती ताके जदि NABARD स्टाफ करली त सेतो ताको से रिफंड कर दियो application without prescribed fee or intimation charges shall be summarily rejected जदि आपण application fee और intimation charges न दियंती ताले सा रिजेक्ट हिजबो application ता तो पे स्केल तो बेसिक रहबो 23100 टंका तापरे डिओनेस अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब मिसी के हो 46500 ओके तो देखो प्री रिक्विजिट तो है कौन मिलो नंबर्स ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी और रिइंबर्समेंट ऑफ पेट्रोल फॉर व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस में पर्सनल पाई नहीं ब्रीफ केस नॉलेज अपडेशन अलाउंस और अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस द एलिजिबिलिटी एज फॉर एलिजिबिलिटी dispensaries facility besides reimbursement of medical expenses for OPD or treatment hospitalization as for eligibility interest free festival advance leave travel concession once in 2 वर्ष रे थरे निज पई स्पाउस और एलिजिबल डिपेंडेंट्स पई तबे लोन and advances at concessional rates of interest for housing, car, education, consumer articles, personal computer. The candidate selected for the post will be governed by the defined contribution to new pension scheme in addition to the benefit of gratuity group term insurance plan. तो NPS तो सब जॉब रे करछि NPS तो ताको NPS ताको कटियो तो अन्य सब आगरे GPF कोर्सला GPF कोर्सला EPF आगरो तो NPS कमिते देयर आर reasonable prospects for promotion of higher grades मध्ये promotion मिलबा और selected candidates will be initially posted in NABARD's head office or regional office team for which they have applied. जो स्टेट में अप्लाई करछन फर्स्ट NABARD हेड ऑफिस में रीजनल ऑफिस है ताके पास रहिबे ता कोइ नै ताके जोठी भी ताके ट्रांसफर करि ताके जाय परिबे जे कोन स्थान में जे कोन स्टेट रे हाउ टू अप्लाई तो NABARD वेबसाइट रे दिबे www.nabard.organization जेकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करिवे पेमेंट एप्लीकेशन फी करिवे फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन को अपलोड करिवे तो लास्ट डेट होची 3 फरवरी तो केते भी से सब
पीडीएफ लिखा जाइए टेलीग्राम को अपलोड करदेवी प्लीज टेलीग्राम को फॉलो करते टेलीग्राम जी केवल @employment@21 टाइप करूँ मो चैनल आसीज तो सेठार देखिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर पारे।